हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 21-22 का हल सहित इसके पूरे आंसर सहित बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो के आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का Which are the two main capabilities of computer? आंसर डी वाला, automation, save time and labor. सेकंड, what is automation? इसका उत्तर है डी, the process by which machines can be used to work for us. थर्ड, computers can be used to. सी वाला इसका उत्तर है to diagnose the nature of patient's illness. चौथा, what is the basic limitation of computers? बी वाला इसका उत्तर है computers can rule over human beings. फिफ्थ, find antonym for the word disable. इसका आंसर है सी वाला, enable. डिसेबल का enable. क्वेश्चन नंबर 6 का द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड अल्टरनेटिव इज. इसका आंसर है ए, अल्टरनेट. 7, इन फ्यूचर डैश मे एनेबल ह्यूमन बींग्स टू एंजॉय मोर लेजर देन दे टुडे. इसका उत्तर है ए, ऑटोमेशन. 8वां, सर लियोन बैगरेट said that in future blank would be developed which would be small enough to be carried in one's pocket. इसका आंसर है बी वाला, कंप्यूटर्स. 9, from the passage find the synonym of freed. इसका आंसर है ए वाला, relieved. 10वां, from the passage फाइंड द एंटोनिम ऑफ सिंपल. इसका उत्तर है ए वाला, कॉम्प्लेक्स. मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट. ऑल्सो गिव ए सूटेबल टाइटल. इसका नोट्स और टाइटल ये है. Section B, question number 3. Asima is going abroad on a foreign assignment for 5 years. She wants to sell her refrigerator, LCD TV, double bed and almirah. Draft an advertisement in about 50 words to be displayed on the housing society notice board. इसका एक और अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है. ड्राफ्ट एन अट्रैक्टिव पोस्टर फॉर सेव ट्रीज सेव अर्थ. इसके आंसर आगे हैं. Question number 4. You are Anand Kumar Mishra, a resident of Preet Vihar, Chhatarpur. Write a letter to the collector of your district telling him about nonsense of loudspeakers in your area. इसका अथवा है write a letter to your uncle thanking him for the birthday present he had sent for you. You are Hari Tiwari, हर्षवर्धन नगर, भोपाल. इस क्वेश्चन के आंसर्स ये दिए हुए हैं.
Question number 5. Write an article on any one of the following topics in about 200 words. A. Physical education in school. B. Hazards of polythene bags. C. Science in our daily life. D. Corruption in India. और E. Corona epidemic. इसके आंसर्स आपको गाइडों में मिल जाएंगे, ऐसे हैं. इसका अथवा वाला, यू आर अमिता दुबे, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन द एक्सीडेंट यू हैव विटनेस्ड यूजिंग फॉलोइंग इनपुट्स. ये आंसर है. आगे Section C. Grammar. Question number 6. Fill in the blanks choosing the correct answer from the given option. 1. His brother is an MLA. Second, Mr. David is a rich person but not happy. 3. Anil is sitting between Kapil and Ajay. 4. He did not buy any apple. 5. Children love to play on the sand. 6. You can not talk in the library. Question number 7. Do as directed. 1. Sonia did her duty. Negative बनाना है. Sonia did not do her duty. Second, the mango is so sour that I cannot eat it. Rewrite the sentence using to. Answer है, the mango is too sour to eat. तीसरा, if you do not work hard, you will fail. Rewrite using unless in place of it. Answer, unless you work hard, you will fail. चौथा, the man had not come for 2 days. B. The man brings potatoes. Combine using relative clause. तो इसका उत्तर है, the man who brings potatoes had not come for 2 days. पांचवा, this news surprises me. इसका वॉइस बनाना है. इसका होगा आंसर, I am surprised by this news. छठवां, rearrange the words to make a meaningful sentence. तो आंसर है, I had a lot of time during exam. Section D. Textbook questions. Question number 8. Read the following extract carefully and answer the questions given below. 1. Name the chapter, The Rat Trap. The passage taken from the lesson, The Rat Trap. Second, what is the antonym of the word petty from the following? इसका आंसर है D. Major. Third, what does the phrase keep body and soul together mean? इसका आंसर है A. Stay alive. Fourth, name the author of this chapter. इसका आंसर है A. Louis Fisher. Fifth, write down the synonym of word gleamed. इसका आंसर है A. Sparkle. Question number 9. A. Read the following extract carefully and answer the questions given below. First question का आंसर, the poetess is driving on which day? Answer B. Friday. Second, who is sitting beside the poetess? Answer A. Her mother. Third, what is the name of the poem? Answer is C. My Mother at
66. Question number 9b. Read the extracts given below and answer the questions that follow. Questions. First answer. How many students were the part of students on ICE program? Answer A. 52. What did the captain instruct to do? Answer C. To climb down the gangplank. Third, what is Gore-Tex? Answer B. A Teflon fabric. Chauथा, underneath our feet was dash thick ice pack. Answer A meter. क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 15 तक हमारे टेक्स्ट बुक, पोएम और जो हमारी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री बुक है उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो कि इनके क्वेश्चन के साथ साथ फिर इसके बाद आंसर्स दिए हुए हैं। तो आप इनको देख लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इन्हीं को याद कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस के बाद इसके आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा।